Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. Today in this video we will cover the topic on symmetry. We will learn about various types of symmetry, that is the reflection symmetry, rotational symmetry. We will also understand what is the line of symmetry called as. So the world is full of beautiful things. Yes, if you like my video, please hit the like button and share with your friends. And if you haven't subscribed my channel yet, do hit the subscribe button for more such interesting videos. आइए start करते हैं. As you all know that some of them are natural things whereas some of them are man-made. Now, many of these things are beautiful because they possess symmetry. So let me write the definition for symmetry, which is symmetry means it refers to symmetry refers to exact match in shape and size between two halves of an object. That means symmetry is defined as refers to the exact match in shape and size between two halves of an object. दो पार्ट्स इक्वल होते हैं, चाहे वो शेप में हो चाहे वो साइज में हो, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्री. सबसे पहले सिमेट्री समझने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. Now, symmetry is defined as harmonious properties of a structure that allows an object to be divided into parts of an equal shape and size. That means it refers to exact match in shape and size between the two halves of the object, which I have just recently told you. Now, what do I mean by line of symmetry means? That means कि pre-image. मतलब अगर मैंने for example, I have taken a right angle triangle, right? You can draw a line through it so that one part is exactly the same as the other part. So that means if you are drawing any line from joining any vertices with any side or any vertices to the other side, that means you are getting the equal parts. So that means this part is equal to this part. If I talk about this butterfly, we have one line of symmetry. Now, why do I have one line of symmetry? Why? Because if I am going to draw a line from the center of the butterfly, I will get the two parts of the butterfly are equal. But if I divide the butterfly into horizontal manner, which is not possible. Why? Because the upper part is not equal to the lower part. Right? So that means butterfly will have only one vertical line of symmetry. Right? अच्छा, उसके बाद हम समझते हैं ना letters and lines of symmetry. Symmetrical in alphabets कैसे होते हैं? You can see the following are some of the capital letters of English alphabets. They are symmetrical about the dotted line, है ना? Dotted line से symmetrical है. Now, what is their axis of symmetry? We have shown you in the figure. You can see. So this is my example number 1, which I will call it as letters. Right? We will do lots of examples because in the exam you may get questions on लाइन ऑफ सिमेट्री. अल्फाबेट्स में पूछ सकता है, रोड साइंस में पूछ सकता है, मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चरल डिजाइंस में पूछ सकता है, रेगुलर शेप रेगुलर जो हमारे पास होती हैं स्क्वायर रेक्टेंगल, उनके बारे में पूछ सकता है. तो हमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लेटर्स के बारे में. राइट, सी ए हैज वन वर्टिकल लाइन, बी सी डी ई सबके पास कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन. एच के पास है दो लाइंस ऑफ सिमेट्री, आई के पास एक है, एम के पास भी एक है, बट ओ के पास हमारे पास होगी इनफाइनाइट. Please make a note which alphabet or which shape has infinite lines of symmetry. So this is the correct answer, that is alphabet O or a circle. T, U, V, W, X में भी हमारे पास देखिए दो लाइंस ऑफ सिमेट्री आ गई हैं, Y में भी एक है. बट कुछ अल्फाबेट्स हमारे इंग्लिश में होते हैं, सम लेटर्स विच डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. क्यों? देखिए, आइए J को देखते हैं. I draw J here, right? Now, if I draw J here, let me also draw L. So, if I divide into half, the case is not possible. If I divide it
horizontally, again it is not possible. But if I say about J, if my dividing, no, I'm not getting this B from either side, so this is also not possible. If I divide it into horizontally, then also not possible. So we have done for alphabet J, we have done for alphabet L, right? So these are some of the examples which do not have any line of symmetry at all if I talk about the English alphabets, right? चलिए बढ़ते हैं next example की तरफ, that is based on nature. Now nature has, this is my example number 2. So first is human being, right? Then second we have is lion, which we can call as animal line of symmetry. Third we have flower. So flower, irrespective, we have 4 petals, 6 petals, 8 petals, 5 petals, 7. Flower can be divided into equal half, either vertically or even horizontally also. Then we have the next as road signs and symmetry. So this is my example number 3. Please keep making a note. Pause करें वीडियो को, बीच बीच में देखें इसमें कौन से examples I have tried to include. Alright. So, first you can see all these have lines of symmetry, right? But then third, ये बहुत important है, right? Why it is important from examination point of view? This is example number I think 4. So this is based on monuments. Now you can see one of the best example and best architectural design in India is Taj Mahal. Now you can see in this picture. So this is the ground, yes, and this is the water, yes. Now when this is the ground, this is the water, you can see an inverted image of Taj Mahal in the water, right? So that means if an object is reflected in water, many people believe that the image has line of symmetry. तो ये जो ground है क्या act कर रहा है इसे line of symmetry की तरह, but it is really a mirror image. ये क्या होती है जबकि mirror image, अभी reflection पढ़ाऊंगी उसमें भी देखेंगे mirror image क्या किसे कहते हैं. अब हम बात करते हैं, this is example number 5. Yes, so this has means flags also have lines of symmetry. कैसे? You can see this WHO sign, I can divide it into vertically, I can also divide it into horizontal, right? So these also flags have lines of symmetry. Now if I talk about this one, how many lines of symmetry? So this is the question for all of you. How many lines of symmetry does this shape have? अगर मैं इन vertices को सबसे पहला काम क्या करूंगी, I will label the vertices A, B, C, D and E. तो सबसे पहला जो हमको यहाँ पे easily दिख रहा है, what I will do is I will connect from A to the side CD. So this has divided my figure into two equal halves. But if I take any point C, B or E or D and take it to the other side, will my figure be equal? No. So that means this figure has only one line of symmetry. Friends, please remember I'm giving you one formula for writing the symmetrical. So that says line of symmetry, that means number of lines of symmetry in regular figures, that means square, rectangle, triangle, regular figures is equal to number of sides. जैसे कैसे, जैसे देखते हैं, अब मैंने आपको बताया एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 साइड है तो इसके आगे 3. अगर हम बात करें स्क्वायर की, राइट, खिचड़ी मच गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं. 1 2 डायगनली भी कर सकते हैं, तो स्क्वायर की भी कितनी आ गई 4 साइड्स होती है, 4 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री आ गई. तो ये फॉर्मूला कहीं पे नोट करके रखो अपने पास. नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द रेगुलर फिगर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स. अच्छा, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री की. ना व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री? This is the simplest kind of symmetry. Q, one of the most common forms of transformation of geometrical shapes you find in nature. अभी हमने देखा था reflection आ रही थी पानी में ताजमहल की. That is why it was a reflection symmetry. Right. Most of the beautiful and important monuments and architectural wonders in the world and India are particularly possess their beauty due to reflection symmetry. हमारे जो world में इतने monuments हैं उनमें सबसे ज्यादा
कौन सी सिमेट्री मिलती है हमको? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सो सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री की। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब a reflection in a line produces a mirror image। तो इसको मिरर सिमेट्री भी बोल सकते हैं जब मिरर इमेज बना रही है। दिस इमेज इज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बट इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल शेप। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखो, हमने लिया फर्स्ट एग्जाम्पल लिया अल्फाबेट बी। दैट मीन्स अगर बी को मैंने रिफ्लेक्ट करा मिरर पे, मुझे बी ही दिखेगा लेकिन वो इन्वर्टेड उल्टा दिखेगा। अगर हम बात करें लेटर एफ की, दिख मुझे एफ ही रहा है बट लेकिन शीशे से दिख रहा है। ई, एल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो सी आ गया, सेमी सर्कल भी कह सकते हो। यू कैन मेक अ ट्रेपीजियम, यू कैन मेक अ ट्रायंगल, बट ट्रायंगल देखो ट्रायंगल की सेम आई, चाहे इन्वर्ट भी हुआ लेकिन सेम आया, दैट मींस इसकी मिरर इमेज ठीक आ गई। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? An object with a rotational symmetry is an object that looks the same after a certain amount of rotation। जैसे मैं आपको पहले सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट? सो दिस इज वन साइड, दिस इज टू साइड एंड थ्री साइड। मैंने पहली बार जब इसको ट्विस्ट करा ट्रायंगल को, तो मेरा 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, राइट? जब मैंने सेकेंड बार इसको ट्विस्ट करा, राइट, तो मेरे पास 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। अगेन जब मैंने इसको थर्ड टाइम ट्विस्ट करा, मुझे वो नंबर बताना है जितने नंबर पे रोटेट करने के बाद मेरे पास ओरिजिनल फिगर, जो मेरी ये वाली ओरिजिनल फिगर है, इस पे आ जाऊं मैं। अब 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, तो मतलब तीसरी बार में रोटेट करके मैं सीधा आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले का मेरे पास ऑर्डर आ गया 3। दैट मीन्स अब ये देखो, ये फिगर है, आप ये फिगर नोटबुक में बना के देखो, इसको 3 बार रोटेट करो, 3 बार आएगा तो इसलिए ऑर्डर 3 हो गया। सिमिलरली ये वाला स्टार है, इसमें ऑर्डर हो गया 6, इसमें ऑर्डर क्या हो गया, 6 बार रोटेट करा, 6 बार, तो 6 बार में आया, दैट इज हो गया ऑर्डर 6। अब हम बात करूं सेंटर पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को एक भी बार रोटेट करूंगी तो मैं एक ही बार में पहुंच जाऊंगी, दैट मीन्स ऑर्डर हो गया 1। और ये वाली 5 इसमें पेटल्स हैं, राइट, 4 पेटल्स हैं, इसको 5 बार रोटेट करने पे मेरे को सीधा मिला। ऑल ऑब्जेक्ट्स इधर हैव वन और मोर देन वन रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, किसी के पास एक होती है, किसी के पास एक से ज्यादा होती है। तो ये हमारा डिटरमाइन नहीं करता कि ये एक से ऑर्डर 1 है या 5 है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो कितने ऑर्डर के रोटेट करने के बाद हमारे पास वापस वहीं पे आ रहा है, राइट। उसके बाद ठीक है, आई थिंक दिस इज फॉर डन सिमेट्री के लिए। So thanks for watching this video and you can find us on Facebook as Learn Easy. Share this video with your friends and don't forget to subscribe to YouTube channel for more updates. आप comment section में थोड़े links देख सकते हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें देखें, आपके ओलंपियाड, आपके एग्जाम्स में काम आएगी when your final exams are approaching or if you're preparing for any competitive exams. Thank you.